Hello students, my topic is isotopes. This is from chapter 4, structure of atom, class 9th. Isotopes. Before studying isotopes, you must be familiar with the atomic number of first 20 elements. So, if you know atomic number of first 20 elements, then you can easily find uh, protons, number of electrons. And here our topic is isotopes. Isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different mass number. अब हम इसको अच्छे से समझेंगे with the help of few examples. जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म किया है, नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले रहे हैं. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, उससे डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम and tritium. These are 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium and tritium. You can easily see I have written in subscript 1, here also 1, and in tritium also 1. So this is showing atomic number. The number which is written in subscript, that shows atomic number, and the number which is written on superscript, that shows atomic mass. So here atomic number of these 3 isotopes, atomic number of these isotopes is same, that is 1, and atomic mass is, for protium it is 1, for deuterium it is 2, and for tritium it is 3. So atomic number is same and mass number is different. So such type of atoms of the same element are isotopes. Let us take one more example. Isotopes of chlorine. Chlorine has 2 isotopes. Chlorine 35 and chlorine 37. Chlorine, here also you can see in the subscript I have written 17. That means atomic number of chlorine is 17. For both the isotopes, atomic number is 17. And here atomic mass. Atomic mass is also called mass number, that is 35. And in this chlorine atom, atomic mass is 37. Atomic mass or atomic number, mass number. Atomic mass or mass number are same. ठीक है, तो they are atoms of same element having same atomic number but different mass numbers are isotopes. Let us take one more example which is also given in your book. Isotopes of carbon. Carbon has 2 isotopes, carbon 12 and carbon 14. अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ सबस्क्रिप्ट में लिखा है 12, that shows atomic 6. Atomic number of carbon is 6 and atomic mass is for one of the isotope it is 12 and for the other isotope it is 14. So these are isotopes of carbon having the same atomic number but different mass number. Mass number 12 and mass number 14. Let us take one more example. Oxygen. Oxygen के 3 isotopes हैं. Oxygen has atomic number 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसके एटॉमिक मासेस हैं 16, 17, 18. तो आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है एंड एटॉमिक मास इज 16, 17, 18. सो आइसोटोप्स, अब डेफिनेशन को फिर से देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. इसके बाद फिर से आप देखोगे क्लोरीन. Isotopes of an element, यहाँ पर क्लोरीन है, having same atomic number but different mass number. Isotopes of carbon have same atomic number but different mass number. Similarly, isotopes of oxygen have same atomic number but different mass number. So these are isotopes of an element. Now there are 3 important points which you should know about isotopes. All isotopes of an element have identical chemical properties. Identical chemical properties क्यों होंगी? क्योंकि इनका
सभी आइसोटोप्स, जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, इसके तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, दे हैव सेम atomic number, so they have same electronic configuration, and if electronic configuration is same, then they will have same valence electrons, and if they have same number of valence electrons, then they will show similar chemical properties. The next is physical properties of isotopes of an element are different. Why physical properties are different? Because of difference in mass number. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, जैसे डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मास ऑफ द एलिमेंट, एंड मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, masses are different, so their physical properties will be different. Next main point is reason for fractional atomic masses of elements. एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें. क्लोरीन का आइसोटोप, आपको पता है क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं 35 एंड 37, एंड दे एग्जिस्ट इन नेचर इन द रेशियो 3:1. दे एग्जिस्ट इन द रेशियो 3:1 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, या फिर अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो 75% एंड 25%. अगर आप इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा 35.5 U. Why fractional atomic mass? Because of presence of isotopes. Chlorine has fractional atomic mass. Why? Because of due to existence of isotopes having different atomic masses. In the next video I will share you how to calculate average atomic mass. Thank you.